Welcome students. In this video, we're going to talk about the different varieties of constraint satisfaction problem that exist and that may influence the algorithm that we choose to solve these problems. Okay. So the basic is the variety of variables that we could have. So we could have discrete number of variables. So again, so the number of variables are countable, and or they could be continuous where we do not have these fine boundaries that define how many variables we do have. If we have discrete number of variables, then the domains could be finite. Where, for example, for a map coloring problem, we have number of states as variables which are discrete. In n-queen problems, n is the number of variables which is again discrete, and the values they could take is also discrete, maybe 1 to n for n-queen problem or some colors for a map coloring problem. And in this case, the total size space is g to the power n, which is could be quite large agar number of variables or domain increases. And even for smaller values of t and n, they could be exponentially large. And for infinite domains, the variables could be finite, but the domains could be infinite. For example, you say that job one, uh, the time it takes to complete job one plus some delta will be required before job 2 could be started. Time and job 1 will be finished, some some gap will be given, and then after that job 2 should start. And so or otherwise the starting time of the starting time of any job 2 should be greater than the ending time plus some delta of any other job. And you can see now the values of t1 and t2 could be continuous because they are time variables. You can have infinite amount of values that could be associated with them. Then your variables could be continuous. जैसे कि हम ऑपरेशन रिसर्च में देखते हैं, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए से हम लीनियर नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो अगेन मोस्टली वी विल डिस्कस about finite domains, discrete variables, but eventually you could have these things in a more subtle way. Okay. So there could be a variety of constraints that we could have. You can have unary constraints. Unary constraint को जनाब ऐसा constraint जिसकी जो कि किसी एक वेरिएबल पर के ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो फॉर एग्जांपल यू आपने कहा जनाब के साउथ ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू जो है वो ग्रेट ग्रीन होगी, या बाइनरी कंस्ट्रेंट जहाँ आपने बताया जनाब के साउथ ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं होगी. एंड देन कुड बी ग्लोबल कंस्ट्रेंट जहाँ पे आप कह सकें जनाब के तीन और बोर्न वेरिएबल जो हैं उनके कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन करें, जैसे कि ऑल डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें हमने कहा जनाब के तमाम वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए. सो देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट जो कि अक्सर बेशतर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. वो है जनाब प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंसेस आर नॉट टिपिकली कंस्ट्रेंट्स जो कि लाजमी होते हैं सेटिस्फाई करना, बट अगर आप सेटिस्फाई कर दें दे आर दिस इज गुड फॉर द यूजर. फॉर एग्जांपल कि कोई टीचर कोई जॉब्स टाइम टेबल स्केड्यूलिंग के अंदर कोई टीचर कह जनाब आई डू नॉट वांट टू टीच ऑन फ्राइडे, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो पढ़ा भी दूंगा. तो अगेन अगर इफ़ यू कैन मेक अ स्केड्यूल जहाँ पर कोई फ्राइडे को कोई क्लास नहीं, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर द टीचर. बट अदरवाइज अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला देन यू कैन ऑलवेज टीच, यू कैन असाइन अ कोर्स फॉर द टीचर इन on that particular time as well. Yeah. Then now this is we have discussed about the different varieties of constraints and variables that we could have. Now let's talk a bit about Janab ke how do we solve these constraint satisfaction problems. Okay. One way is we can use a brute force approach. Now, what is a brute force approach? If you remember from your algorithms course, a brute force approach implies जनाब कि आप तमाम possible solutions जो हैं उनको एक्सप्लोर कर लें और उनके बाद फिर देखें जनाब कि कोई सोल्यूशन में से कोई ना कोई एक सोल्यूशन जो है वो यकीनन सही काम करेगा, बिकॉज दिस इज द प्रीमाइस ऑफ अ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन. अगर तमाम पॉसिबल सोल्यूशन आपने देख लिए तो उनमें से लाजमी कोई एक सोल्यूशन जरूर होगा जो बिल्कुल सही होगा. बट आप जरा देखते हैं जनाब क्या ये फिजिबल है भी कि हम ब्रूट फोर्स तरीके से तमाम सोल्यूशन जो हैं उनको क्या देख सकते भी हैं या नहीं देख सकते. तो इफ लेट्स से बहुत जनाब कि हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं और हर डोमेन 3. So this would require कि जनाब कि we would check 3 to the power 5 combinations. ठीक है. तो again every variable could take 3 values and 3 into 5. So power of 3 into 3 into 3 into 3 is 3 to the power 5 combination. And then you can see जनाब के in this combination you are
this combination is failing because this constraint is not satisfied. A should not be equal to B, and what we are doing is changing everything but this constraint. We are changing everything but the constraint that is causing it to fail. Okay, so that is why we are spending too much time in exploring solutions that are not going to work. ठीक है, तो 3/5 कॉम्बिनेशन में तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकते हैं और जिसमें से बेताशा जो है वो सही होंगे ही नहीं. So why spend so much time in evaluating these useless solution, whereas we can spend the same time in finding out solutions जो कि ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा feasible है उसके 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 contrast में. Okay, this is what approach is. Okay, so this is another example of the 8 queen problem. So you can generate many solutions, and so if you want to place 4 queens, then you would have about, if you have 16 columns, then 16 into 15 into 14 into 13 are the space that you have to see, which is not small by any stretch of the imagination. Okay, for any n, so n queen problems will be n square multiplied by n square minus 1 multiplied by n square minus 2 and then multiply by n square minus 3 से लेके n square जो भी आपकी माइनस n square minus n by the way. ठीक है, तो इतने इतने आपको चेक करने जो है वो पढ़ सकते हैं अपने सॉल्यूशन which are still a very large number. सो हम कैसे सॉल्व करें इसको, तो कैन वी यूज सर्च. तो जो हमारी ट्रेडिशनल सर्चेस थी क्या हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. लेट्स सी जनाब के इफ वी यूज ब्रेथ फर्स्ट सर्च देन हाउ वुड आई डू. तो मैं कैसे काम करूंगा ना, आई विल स्टार्ट विद एन एम्प्टी स्टेट इनिशियल असाइनमेंट, देन आई विल चूज अ वेरिएबल लेट्स से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. उसको मैं, उसकी रेड वैल्यू भी हो सकती है, उसकी ग्रीन वैल्यू भी हो सकती है, उसकी ब्लू वैल्यू भी हो सकती है. And then for every red, I will choose another variable, let's say an NT, Northern Territory. And then I will initialize it as red, initialize it as blue, initialize it as green, and repeat the process for these variables and these and so on and so forth. And for that, I will again explore another variable with all the possibilities. And you can see, janab, this is exponential. So at this rate, we have 0 states, then we have 3, then we have 9, then we have 27, then we have 81, then 243, and so on and so forth. So again, breadth first search, if you are using breadth first search, and in even the best case, I have to go to the last level. In the worst case, I have to explode e to the power n nodes. ठीक है, and the traditional searches are not good. And even though जब मैं पूरा आखिर में पहुंचूंगा, जब मैंने हर वेरिएबल को इतना वैल्यू असाइन कर दी होगी, so sorry it is so again yes, so जब मैं पूरी सब वैल्यूज को असाइन कर चुका हूँ जनाब, तब कहीं जाकर मुझे पता चलेगा कि भाई ये कोई सोल्यूशन सही है नहीं. तो मैं सोल्यूशन कब चेक करूंगा कि मेरा सोल्यूशन सही है नहीं? बिल्कुल आखिर में जाके, when it's already too late. Can so we can see जनाब के सोल्यूशन पहले पता चल जाएगा आपको कि सोल्यूशन सही है नहीं सही है, बट मैं कोई चेकिंग जो है कब कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एंड में जाके उसकी चेकिंग कर रहा हूँ जनाब के सोल्यूशन जो है, क्या वो सोल्यूशन जो है वो करेक्ट था या नहीं था. सो CSP एल्गोरिथम जो है बेसिकली, जो हमारे ट्रेडिशनल सर्च एल्गोरिथम थोड़े से डिफरेंट है. दे विल डू टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग कि जनाब के दे विल सर्च, दे विल असाइन अ न्यू वेरिएबल फ्रॉम अ न्यू वैल्यू फ्रॉम मेनी पॉसिबिलिटीज जो कि एग्जिस्ट करते हैं. एंड द सेकंड इज इन्फर. इन्फर का मतलब क्या होगा जनाब, तो ये देखेंगे जनाब कि किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से क्या किसी दूसरे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा. And do not worry, we're going to express this notion in this video or the next. And so see जनाब कि क्या मतलब है कि जनाब कि हम इन्फर करेंगे कि किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से क्या दूसरे वेरिएबल पे कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता. ठीक है, एंड समटाइम्स वी विल ऑल्सो डू सम प्री प्रोसेसिंग. और कभी कभी ऐसा होगा कि वो प्री प्रोसेसिंग जो है, यानी कि सर्च एल्गोरिथम को रन करने से पहले हम कोई प्री प्रोसेसिंग करेंगे, एंड इवन वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन इन जस्ट द प्री प्रोसेस. कैन वी विल सी, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ और सिर्फ प्री प्रोसेसिंग करके हम अपना काम कर सकते हैं. एंड यू कैन सी जनाब कि दिस इन्फ्रेंस एंड सर्च कुड बी इंटरमाइंड टुगेदर टू फाइंड टू मेक अ एल्गोरिथम दैट इज suitable for the constraint satisfaction problem. So the first algorithm, again, the algorithm we're going to discuss as backtracking search. Again, it can also be referred to as BTS. Okay, I do not
I understand there's also a musical band called BTS, but it's not nothing to do with BTS. So BTS is backtracking search. इट्स द बेसिक अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो कि हम सीएसपी के लिए यूज करेंगे, बेसिक अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। नहीं, अभी इसके अंदर हमने कोई ह्यूरिस्टिक्स ऐड नहीं किया, इनको इन्फॉर्म नहीं बनाया है, बट ये बेटा बेसिक एल्गोरिथम है सब, इट्स वेरी बेसिक। सो तो ये बेसिकली डेप्थ पर सर्च की तरह काम करता है, बट विद अ डिफरेंस। पहला काम तो ये करेंगे ना आपके, इट विल असाइन वन वेरिएबल एट अ टाइम। ठीक है, तो एक एक करके वेरिएबल असाइन करेगा या ना आपके और और जो असाइनमेंट कम्यूटेटिव है, तो मतलब जनाब के पहले आप ए को असाइन करें बाद में बी को असाइन करें, या पहले बी को असाइन करें बाद में ए को असाइन करें, दे आर द सेम थिंग, डज नॉट मैटर। ठीक है, कि आप ए को असाइन कर रहे हैं बी को असाइन कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जनाब के दे विल चेक द कंस्ट्रेंट्स एज दे आर गोइंग अलोंग। इसका मतलब ये हुआ जनाब के, जैसे कि अगर आपने ए को असाइन किया कोई वैल्यू आर लेट सपोज, और बी की वैल्यू अगर आपने ए को रेड असाइन किया और ए बी का नेबर था, तो अब आप बी को रेड असाइन करने के साथ साथ देखेंगे जनाब क्या बी को रेड असाइन कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता। अगर आप बी को रेड असाइन नहीं कर सकते और कोई वैल्यू नहीं बची बी के लिए, तो जनाब आप बैक ट्रैक करेंगे एंड यू विल गो एंड चेंज द वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज ए को रेड असाइन करने से बी के लिए कोई वैल्यू नहीं बची, दैट वुड मीन देयर वोंट बी एनी सॉल्यूशन। तो यू विल गो बैक एंड लुक फॉर अनदर सॉल्यूशन जो कि एग्जिस्ट करेगा या फिर जो कहीं काम करेगा। सो हाउ इट वर्क, तो वी स्टार्ट विद एम्प्टी असाइनमेंट, तो इनिशियली किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं होगी, एंड देन एवरी स्टेट विल रिप्रेजेंट अ पार्शियल असाइनमेंट। पार्शियल असाइनमेंट क्या होगा कि ना किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू मिली हुई होगी और कुछ वेरिएबल से कोई वैल्यू जो है वो नहीं मिली हुई होगी। ठीक है, सक्सेसिव फंक्शन क्या होगा कि जनाब आप कोई भी एक वेरिएबल चूज करेंगे और उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, तो वी नो के स्टेट में क्या हो रहा है, वी नो कि जनाब के हमारे सक्सेस फंक्शन में क्या हो रहा है। और देन गोल टेस्ट क्या होगा कि जब तमाम वेरिएबल्स को कोई वैल्यू मिल चुकी होगी ये अलाउेबल डोमेन में से, और तमाम कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो लेकिन वी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ट्रेडिशनल सर्च में मैं नहीं बता होता कि स्टेट में क्या होता है या गोल टेस्ट में क्या होता है, सक्सेस फंक्शन में क्या होता है, बट सीएसपी के अंदर वी नो एग्जैक्टली के स्टेट्स किस चीज़ से मिलके बनती हैं, सक्सेस फंक्शन क्या होता है और गोल टेस्ट कब हमें गोल डिक्लेयर करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। So let's suppose in आपके you have this map clearing problem with 5 states. तो you start with this state initially, आपने किसी भी लोगों वैल्यू साइन नहीं करी हुई है, तो तमाम कलरलेस है। You will select a variable, let's say आपने select किया A, आपने तीनों इनिशिएट कर लिया, एक में रेड भी हो सकता है, ब्लू भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, and then you choose another variable and you initiate another variable and you decide कि जनाब कैसे काम करेगा, and then you initiate another variable and another variable। जैसे अगर आपने कहा जनाब कि अगर A रेड है तो B रेड नहीं हो सकता, तो you will choose another value। आपने कहा A तो ग्रीन हो सकता है, ठीक है भाई, फिर आपने C को देखा, C रेड नहीं हो सकता बिकॉज A रेड है, C ग्रीन नहीं हो सकता बिकॉज B ग्रीन है, और C फिर एक ही ऑप्शन बचता है ब्लू, एंड देन यू विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। ठीक है, एंड अगर सी ब्लू भी नहीं हो सकता तो देन यू विल गो बैक एंड चेंज द वैल्यू ऑफ बी टू ब्लू, एंड देन यू विल डू सम अदर फॉर्म ऑफ चेकिंग। ठीक है, तो यू विल हैव एन बेकिंग आइडिया जनाब के बैक ट्रैकिंग सर्च जो है वो किस तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है, सो अगेन इफ यू टेक द मैप क्लिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक, यू कैन सी जनाब के यू विल इनिशियलाइज द रेड green blue, then choose another variable, another variable, another variable, and so on and so forth. So you can see now how backtracking search works, and as soon as something fails you backtrack। ठीक है, आपने देख सकते हैं आपके यहाँ पे आपके सिर्फ उसने दो ही ऑप्शन एक्सप्लोर किए, इट्स आइदर रेड और ब्लू, इट कैन नॉट बी ग्रीन बिकॉज ऑलरेडी दिस इज ग्रीन। ठीक है, सो बैक ट्रैकिंग सर्च जनाब कैसे काम करती है, तो बैक ट्रैकिंग सर्च का नाउ दिस कपल ऑफ लाइंस ऑफ कोड एक्चुअली विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरी वेरी लार्ज प्रोग्राम। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो विल फाइंड कि जनाब के यू विल रिक्वायर many lines of code to implement this thing। I will make another video to show you, demonstrate you the working of the internal working of this algorithm, but for the time being just look at this algorithm a bit more abstractly। So backtracking search जनाब when start करते हैं with an initial assignment जो कि empty है, and then the CSP जो describes करती है कि variable क्या है, domain क्या है, constraint क्या है। तो backtracking क्या करता है जनाब के it will is recursive process। तो अगर assignment complete है यानी कि तमाम variable का value मिल चुकी है, then it will return the assignment। Otherwise it will select a variable from the unassigned variable, जो अभी तक जिनको value assign नहीं हुई है उनमें से कोई variable select करेगा। Then it will run a loop। और loop क्या होगा जनाब के कि एक खास ऑर्डर में उस सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यूज को सर्च करा जाएगा वन बाय वन। अगर वैल्यू कंसिस्टेंट है विद द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो आपने साइन करी थी डिफरेंट वेरिएबल को, तो आप उसको ऐड कर लेंगे।
उस वैल्यू को असाइनमेंट में ऐड कर देंगे और दूसरे वेरिएबल्स के लिए कॉल कर देंगे रिकर्सिवली अपने बैक ट्रैकिंग सर्च को। अच्छा, अगर रिजल्ट फेलियर, इसका मतलब जनाब कि आगे जाके कोई फेलियर हो चुका है, तो आपको ये वाली वैल्यू चेंज करनी है। अगर रिजल्ट फेलियर नहीं है तो आपका रिजल्ट मिल चुका है, यू विल जस्ट बैक रिटर्न इट एंड योर सोल्यूशन इज फाउंड। अगर सोल्यूशन फेलियर है देन यू विल रिमूव दिस वैल्यू बिकॉज इस वेरिएबल की इस वैल्यू ने काम नहीं किया, यू विल सिलेक्ट अनदर वैल्यू। अगर कोई भी वैल्यू मैंने काम नहीं किया देन यू रिटर्न फेलियर, यानी आपकी 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 जो इस वेरिएबल पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो यू विल हैव टू बैक ट्रैक एंड सी द वैल्यू वेरिएबल जो इससे पहले साइन हुआ था। तो बैक ट्रैकिंग विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली। तो आपको इसमें बड़ी खुद नहीं करना पड़ता कि मुझे मुझे खुद किस तरीके से इसमें चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है जी। तो नाउ दैट वी हैव looked into the basic form of backtracking, now in the next videos we going to talk about जनाब किस तरीके से हम अपनी backtracking सर्च को बेहतर बना सकते हैं।